शुभ संध्या आपण माननको आजिर अध्याय आरंभ करने पूर्व सम्यक धारणा देवाक चाहूँगी। आज आम BECC133 द्वितीय भाग बा ब्लॉक 2 पढ़ा। ब्लॉक 2 भितर आम यूनिट 4 और यूनिट 5 अच्छे जहाँ क्लासिकल और केन्सियन सिस्टम प्रथम यूनिट 4 रे रहिबो क्लासिकल और केन्सियन सिस्टम, यूनिट 5 रे रहिबो केन्सियन मॉडल ऑफ इनकम डिटरमिनेशन। जेमति कि मु आपन मानको कहितिली गत काली जे मैक्रो इकोनॉमिक्स एमिति गोटे अर्थशास्त्र जे कि इनकम डिटरमिनेशन, एम्प्लॉयमेंट डिटरमिनेशन, वेज डिटरमिनेशन बा आमे कहबा ये जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल डिटरमिनेशन आमको साहाय्य करिथाए। मीनिंग दैट आमे क्लासिकल एथरे आमे पढ़िबा क्लासिकल और केन्सियन सिस्टम केमिति तांकर इकोनॉमिक वेरिएबल को डिटरमाइन करछंती, तांकर कांसेप्ट कोन अछि। तापर आमे पढ़िबा केन्सियन मॉडल ऑफ इनकम डिटरमिनेशन। मान केन्स कोन कहितले इनकम हाउ केमिति इनकम बढ़िबो देश रे इनकम तबले आमे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहूचे इनकम माने देशीय इनकम बा जातीय इनकम जोटा आम गतकाली पढ़ी नेशनल इनकम। तो सेकेंड आज सेकेंड अध्याय रहा केन्सियन मॉडल ऑफ इनकम डिटरमिनेशन। अच्छा, तो क्लासिकल और केन्सियन सिस्टम टा कौन आम कहले आम तो बड़े मैक्रो इकोनॉमिक्स उत्पत्ति है उत्थान है इमर्ज कला के मैक्रो इकोनॉमिक्स सेपरेट इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन है कहीं किछिटा फॉल्ट रही जाइथिला क्लासिकल सिस्टम रे। क्लासिकल सिस्टम माने जो माने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जेमति कि आमे कहबा एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल, एसी बिगो लाइक ए माने जेमति कि आमे कहबा आगु से जेबी से ये माने हेले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जोटा कि 1933 पूर्व जो माने इकोनॉमिस्ट थिले से मान को जाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। 1933 पर जो माने आछंती जेमति कि केन्स ता पर जो माने इकोनॉमिस्ट एंड केन्सियन बा पोस्ट केन्सियन इकोनॉमिस्ट। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माने कोन तांकर आइडिया थिला क्लासिकल आइडिया इनक्लूड ता भीतर कौन कौन रही मु कहली मैक्रो इकोनॉमिक्स केतेबेले आस्थिला जेतेबेले माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल कला बा क्लासिकल इकोनॉमिक्स फेल कला पर मैक्रो इकोनॉमिक्स इमर्ज कला। तो बेसिकली आम जदि कह मुख्यतः माइक्रो क्लासिकल इकोनॉमिक्स बेस्ड करछि माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज। माने क्लासिकल इकोनॉमिक्स बिलीव इन मार्केट मेकानिज्म फ्री मार्केट मेकानिज्म के मुक्त बाजार व्यवस्था फ्री मार्केट सिस्टम। ता माने एठी से कहया चाहते दुईटा फोर्स अच्छी जमी आम इकोनॉमिक्स कही माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड फोर्स और सप्लाई फोर्स। तो सी कहूना जे किछि बड़का रही सप्लाई अधिकार हो डिमांड अधिकार हो सब बेले गोटे मार्केट रे बा जो बाजार रे समानता तैयारी करा जाए बा इक्विलिब्रियम तैयारी करा जाए केमती ना डिमांड एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई केमती जदि से कहते माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज माने धरा जो आम कहबा गोटे वेज एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट केतବେଳେ बढ़िबो जेतବେଳେ वेज प्राइस कम रहिबो। तेणु वेज प्राइस जदि कम रहिबो ताहले जो माने बिजनेसमैन बा प्रोड्यूसर से माने लेबर डिमांड अधिक करेंगे जितेबाला आम सप्लाई ऑफ माने आम सप्लाई ऑफ लेबर सपोज सप्लाई ऑफ लेबर इज मोर देन डिमांड फॉर लेबर माने डिमांड चाहिदा तार जोगाण अधिक अच्छी माने वेज प्राइस कमी जीवो। तो वेज प्राइस कमी गले बिजनेसमैन मैंने डिमांड करेंगे सिमिलर सेमती से एका भाई जदि डिमांड अधिका थी सप्लाई टार वेज प्राइस बढ़ी जीवो तो ऑटोमेटिकली वेज प्राइस बढ़ीगला माने डिमांड ऑफ सप्लाई पुणी डिमांड फॉर लेबर कमी जीवो। तो यही माइक्रो इकोनॉमिक्स ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिनेशन हम वेज डिटरमिनेशन हम। तो माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज बेसिकली मार्केट मेकानिज्म
डिपेंड करुच्ची। सेकेंड जिनस लासेस फेयर मोस्ट इम्पोर्टाट पार्ट आमर लासेस फेयर इकोनॉमी कौन कौन ना आम मूल गत काली भी कथा होते जे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते आम कौन सी गवर्नमेंट को इंटरव्यून करने दबू ता माने एटा फ्री इकोनॉमी हम दैट शुड नॉट बी एनी इंटरवेंशन माने गवर्नमेंट इंटर कौन सी संस्था तादर इंटरव्यून करें कहीं आम कह बिजनेसमैन तार प्रोड्यूसर तार सप्लाय करू कंज्यूमर तार कंजप्शन कर जिते बड़े अधिका कम हो ऑटोमेटिकली प्राइस ताको प्राइस कम अधिका हेल्ले ताको पुणी डिमांड सप्लाय समान करदेव सपोज डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज मोर देन सप्लाय ऑफ तमाम प्राइस बढ़ी जाओ प्राइस बढ़ीगला पुणी ऑटोमेटिकली सप्लायर सप्लाय अधिक कर तो ऑटोमेटिकली पुणी सप्लाय बढ़िला डिमांड सहित मिसीगला तो माने nobody should intervene in the activity of the business or economic activity तो लासेस फेयर सिस्टम टा से माने चाहूले बट आम जानी गत काली आम पढ़ले लासेस फेयर हवा द्वारा ये टाइप फ्री इकोनॉमी हवा द्वारा इंटरवेंशन न हवा द्वारा कौन 1933 जो क्राइसिस है इकोनॉमिक क्राइसिस सेटा आम देखीचे सेटा भी आगक आलोचना करवा तो कंटिन्यूअस मार्केट क्लियरिंग जोटा आम कहते नेक्स्ट फीचर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एज्यूम दैट प्राइसेस एंड वेज रेट आर फ्लेक्सिबल ता माने एटा कुछ वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी नो तामाने केंसियन आम आगे बस रिजिडिटी अच्छी तामाने इजिली जदि वेज प्राइस डिपेंड कर लेबर एंड लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई तो ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई विल बी क्लियर व्हेन वेज प्राइस विल बी फ्लेक्सिबल परफेक्ट कंपटीशन एटा गोटे मुख्य फीचर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट परफेक्ट कंपटीशन कौन कहूँ ना आम जाचे माइक्रो इकोनॉमिक्स रे जो मार्केट चैप्टर पढ़ी परफेक्ट कंपटीशन एमती गोटे मार्केट सिस्टम ये लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर थी आ प्राइस टा डिसाइड किए करे ना इंडस्ट्री करे फार्म टा प्राइस टा को एक्सेप्ट कर जो प्राइस टा डिसाइड होता सिमिलरली आम जब कह लेबर मार्केट रे लेबर प्राइस टा मार्केट डिसाइड करवा आम ईच एंड एवरी प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन ताको से लेबर प्राइस टाको एक्सेप्ट करेंगे सो दिस इज द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव दैट इज यदि परफेक्ट कंपटीशन रहिला ताले स्मूथली सब चलियो बोली से कहते ओके नेक्स्ट है हमर सेज लॉ ऑफ मार्केट यदि आम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कथा कहवा मुख्य तांकर जदि जो लॉ मुख्य मॉडल जोटा कह सेज लॉ माने जेबी से तांकर जो इकोनॉमिस्ट थे लीडिंग इकोनॉमिस्ट से कौन कहले सब माने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आम जदि कहवा केंसियन आगुक तो जीवा क्लासिकल और केंसियन भितर जो डिफरेंस देखा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ऑलवेज कहते जे ना सप्लाई दे स्ट्रेस से अधिक स्ट्रेस दियंती कहते ना सप्लाई साइड ता माने आमे इकोनॉमी रे सप्लाई बढ़ई चल डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ी जीवो तो मार्केट फोर्स अनुसार डिमांड बढ़ तो आम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते सप्लाई इज मोर इम्पोर्टाट दैन दैट ऑफ डिमांड आम कह सप्लाईटा डिमांड ठार बहुत इम्पोर्टाट किंतु केन्स आम पढ़ा जे डिमांड से केन्स ऑलवेज कहले जे इफेक्टिव डिमांड और एग्रीगेट डिमांडटा प्लेज वेरी वाइटल रोल फॉर एन इकोनॉमी माने गोटे डिमांडटा जब आम बढ़ेबा ऑटोमेटिकली सबूर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स इनकम सेविंग इन्वेस्टमेंट निर्भर आगे आम देखा तो जेबी से कौन कहले सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड माने यू जस्ट आम सप्लाई कर चलवा डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ केमती ना सप्लाई आम कर चले प्राइस कमिज जदि आम कंपेयर करवा डिमांड और सप्लाई अधिक अच्छे तो ऑटोमेटिकली प्राइस कमिज प्राइस कमिले लोक डिमांड करते आम जाने माइक्रो इकोनॉमिक्स आम पढ़ीचे तो देयर विल बी नो डेफिशिएंसी और सरप्लस ऑफ डिमांड तो देयर विल बी ऑलवेज इक्विलिब्रियम जोटा कहते आम इक्विलिब्रियम सब मेंटेन करिवो तो तापर आम देखिबा आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन क्लासिकल सिस्टम आम कहवा जदि आम क्लासिकल सिस्टम इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट ये विषय आम केमती डिटरमिन हुए ये विषय आलोचना करवा आम माइक्रो इकोनॉमिक्स रे पढ़ीचे प्रोडक्शन फंक्शन
कौन ना आम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ी जे फंक्शन और इट इज ए कौन टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट ना माने आम इनपुट को केते परसेंट बढ़िले आउटपुट केते परसेंट बढ़िबो दैट इज द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ता आम माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक जदि आम लेबर और कैपिटल दीटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होइतिबे ताले इनकम बढ़ी चलिबो एठी आम y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल एंड के एल है लेबर के इज कांस्टेंट माने आमे गोटे फैक्टर को कांस्टेंट रखिबा गोटे फैक्टर को बढ़ाइबा तो एल टा को बढ़ाइले केते आउटपुट बढ़ुची तो चेंज इन आउटपुट ड्यू टू एडिशनल यूनिट of labor is known as marginal product of labor. So it is given by the expression of हमें आगुर जानी MPL और marginal productivity of labor is equal to delta y by delta L माने change in हमें किछिटा labor change करूचे जदि product by income बढ़ुची ताहले हमें देखिबा द marginal product बढ़ुची ता माने जेहेतु k is constant ताहले हमें देखि परिबा labor बढ़िया तर केते हमर आउटपुट बढ़ुची एठी हमें जेहेतु कहले क्लासिकल इकोनॉमिक्स मेजरली कहले लेबर डिमांड और सप्लाई दैट प्लेज मेनी मोर इम्पोर्टेंट इन ए क्लासिकल इकोनॉमिक सिस्टम बट काहे कि ना जे माने प्रोडक्ट से माने कहले प्रोडक्शन रे सहाय लेबर कोन पय डिमांड करा जिवो ना एटा प्रोडक्शन बढ़िया पे लेबर ही मुख्य रोल तैयारी करता है सो फार्म विल हायर लेबर हाँ के पर्यंत लेबर टाक आम हायर करवा जे पर्यंत मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू रियल वेज दैट इज WIP वेज बाय प्राइस दैट इज रियल वेज तो जेतबेले आमे कहूचे इक्विलिब्रियम तो जेतबेले प्रोडक्ट इज इक्वल टू रियल वेज आमे सेतबेले कहबा एटा हला कोन से पर्यंत आमे गोटे लेबर को हायर करथिया तापर कोन होबे ना तापर प्रोडक्टिविटी कमी जिवो आमे पढिथिले लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रे प्रोडक्टिविटी कमिले आमे ताकू लेबर को अधिक लेबर नबा नाही सो एग्रीगेट लेबर डिमांड फंक्शन ता कोन कहला हमर एग्रीगेट लेबर डिमांड फंक्शन कहला LD दैट इज डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वेज प्राइस और रियल वेज दैट इज अ नेगेटिव फंक्शन माइनस नेगेटिव फंक्शन माने आमे जदि वेज प्राइस कमिबो लेबर डिमांड बढ़िबो सो एटा हउछ नेगेटिव फंक्शन आ एटा यदि बढ़िबो एटा कमिबो माने वेज प्राइस बढ़िले लेबर डिमांड कमिबो तो नेगेटिव लेबर डिमांड इंडिकेट्स हायर द रियल वेज लोअर द डिमांड फॉर लेबर तापर हम आसे सप्लाई ऑफ लेबर जोटा कि LS दैट इज लेबर सप्लाई इज द पॉजिटिव फंक्शन ऑफ रियल वेज हम एट कहिथिले नेगेटिव फंक्शन लेबर डिमांड लेबर सप्लाई टा पॉजिटिव फंक्शन माने एटा देखंतो प्लस लिखा आइछि ता माने लेबर सप्लाई केतबेले बढ़िबो माने जेतबेले वेज प्राइस बढ़ी सो सप्लाई ऑफ लेबर इज कैन सप्लाई के आमे जो माने लेबर माने सप्लाई माने सेतबेले जीव अधिक अवेलेबल जेतबेले सेतिका डिमांड के करे लेबर ना हमर बिजनेसमैन माने डिमांड करे सेतबेले से माने डिमांड अधिक करे तो वेज प्राइस कम तो while maximizing the utility individuals decide the amount of work to put in and amount of leisure हाँ एमे तोले maximize गोटे लेबर टा करबा बा लेबर टू आमे हायर करछे आमे दीटा जिंस देखुछे गोटे लेबर तार केते वर्क अमाउंट ऑफ वर्क दउची आ केते अमाउंट ऑफ लीजर से जे करछि दीटा जिंस से मान इंपोर्टेंस देछे एबे आसिले आमे कोन जानिले डिमांड फॉर लेबर जानिले तापर सप्लाई ऑफ लेबर जानिले ता माने आमे जेम से कहि मार्केट फोर्स दीटा डिमांड एंड सप्लाई पुनी इक्विलिब्रियम ता माने से कहिले इक्विलिब्रियम कंडीशन सेतळ हबो जेतबळे लेबर डिमांड आ लेबर सप्लाई इक्वल हबो ता माने इक्विलिब्रियम कंडीशन इन लेबर मार्केट दैट इज LD and LS along with the production function determines the output employment and real wage in the classical system एटा हला मुख्य जिंसो आपण माने समस्त देखंतु कोन ना लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई सहित प्रोडक्शन फंक्शन जोटे हम कहबे दैट डिटरमाइंस द आउटपुट माने हम
कौन सी गोटे इकोनॉमी रे बा आर्थिक अर्थनीति रे ताले आर्थिक व्यवस्था रे जदि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट आउ रियल वेज रेट बढ़िया पे चाहूचे बा डिटरमिन करिया चाहूचे क्लासिकल सिस्टम रे ताले बेसिकली लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई अलोंग विथ प्रोडक्शन फंक्शन ये दीटा जिनस को आम नहीं कि आउटपुट एम्प्लॉयमेंट और रियल वेज टा डिटरमाइन कर परिबा आम ताले आम जानिले बर्तमान क्लासिकल इकोनॉमी सिस्टम माने एहा कहले ठीक अछि तो एटा में तार ग्राफ देखि परिबा तो आपण मानकर जो स्टडी मटेरियल आपण माने ताको रेफर करि परिबे सब एक्सप्लेन भी कराई जहाँ आम कथा हो स्टडी मटेरियल भी हम से हिसाब लिखाई तो आम प्रथम रू कही वाई द फंक्शन ऑफ एल एंड के ता माने दैट इज प्रोडक्ट इज इक्वल टू फंक्शन प्रोडक्शन इट इज प्रोडक्शन फंक्शन लेबर और जेहेतु कैपिटल टा कांस्टेंट तो आम जिते लेबर बढ़ाइबा सेते प्रोडक्शन बढ़िबो अच्छा सेकंड इक्वेशन कौन थिला हमर लेबर डिमांड इज द फंक्शन ऑफ नेगेटिव फंक्शन ऑफ वेज प्राइस माने रियल वेज रो नेगेटिव फंक्शन हैला लेबर डिमांड आउ पॉजिटिव फंक्शन हैला लेबर सप्लाई ता माने हमें आगुरो एटा कथा हे जे ता एला बेस्ड ऑन दिस थ्री इक्वेशन हमें एठी देखिबा एटा हैला लेबर डिमांड कर एटा हैला लेबर सप्लाई कर जोटी लेबर डिमांड कर और लेबर सप्लाई कर डिमांड कर एंड सप्लाई कर जोटी इंटरसेक्ट करले बा दी जन को छेद कले सेटा कहते इक्विलिब्रियम पॉइंट तो इक्विलिब्रियम आउ एटा हला प्रोडक्ट लाइन तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ k तो एटा हला डिमांड और सप्लाई लेबर कर आउ एटा हला फंक्शन ऑफ दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन इन क्लासिकल इकोनॉमी सिस्टम तो हमें आज से कथा ही पढुचे क्लासिकल इकोनॉमी सिस्टम रे केमिति आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन करा जाए तो एठी हमें देखिले प्रोडक्शन केमिति बढ़े लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन बढ़े इंक्रीजिंग रेट रे जीवो तापर मैक्सिमम हो तापर डिस्ट्रीब्यूटेड काइना लेबर टा गोटे एमिति इनपुट किछि दिन किछि समय परे हमें अधिक लेबर हायर करले तारा प्रोडक्टिविटी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी रो लेबर रो कमे तो सेठी हम सेही पर्यंत नबा जतबे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी और लेबर रियल वेज से तो समान थिबो ठीक अछि एबे एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन हमें जानिबा डिमांड फंक्शन जानिले ताले एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन इज वर्टिकल आमे यदि कहबा क्लासिकल इकोनॉमिक्स माने कहते फुल एम्प्लॉयमेंट तो ऑलवेज द मार्केट ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट अछि ता माने ऑल रिसोर्सेस जते रिसोर्स अछि मार्केट रे बा इकोनॉमी सब यूटिलाइज हे जाय ता माने एटा हला इनइलास्टिक सप्लाई कर्व इज इनइलास्टिक विथ ए सर्टेन प्राइस इन एनी प्राइस तो आमे जब एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल और इनइलास्टिक higher price will result in higher output only if they are not accompanied with high money wages. We make an important observation at this point that the shape of aggregate demand curve will not make any difference to equilibrium level. मैं मूलर कहती दे सप्लाई से माने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहउछंती सप्लाई साइड को माने से माने सप्लाई साइड को बेसी इंपोर्टेंट दउछंती से तांकर डिमांड सहित किछि नै केना डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ी चलिबो तेणु डिमांड चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन सप्लाई ये जोटा हमें कहबा सप्लाई अनुसार डिमांड बढ़िबो अच्छा एबे हमें पढिबा केन्सियन सिस्टम कोन हमें सम्यक धारणा देले क्लासिकल सिस्टम हमें जदि कहबा क्लासिकल सिस्टम कोन ना फुल एते माने फुल एम्प्लॉयमेंट रे विश्वास करंती से माने मार्केट फोर्स ऊपर निर्भर करंती बा मार्केट इकोनॉमी ऊपर सबले निर्भर करंती से माने इंटरवेंशन चाहती लासेस फेयर इकोनॉमिक्स ऊपर विश्वास करती तो यही टाइप हमें वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी माने फीचर भीतर थिला हम लास्ट एपिसोड रे पहले लास्ट स्लाइड रे देखिले एबे सुनिबा इकोनॉमिक्स कोन कहू केन्सियन इकोनॉमिक्स कोन केन्सियन इकोनॉमिक सिस्टम टा कोन तो जमती तांकर आमे से क्लासिकल इकोनॉमिक्स मानकर देखिले फीचर से भलिया केन्सियन मानकर कोन सेठी कहितिले सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड एठी केन्स कहले नै डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई यू आमे डिमांड बढ़ै जदि डिमांड बढ़िला ताले ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़िबो
सप्लाई बढ़िले डिमांड न बढ़ी पारे न बढ़ी पारे सेमती किसी निश्चितता नहीं कहीं कहले 1933 जो ग्रेट डिप्रेशन समय रे केत कौन है ना सप्लाई अधिक बढ़ीगला डिमांड तारी ये जो अर्थनीति गुड़े अमेरिकन अर्थनीति बा यूरोपियन अर्थनीति अफेक्ट करथिले प्रभावित होते तो रिजिडिटीज इन प्राइस एंड वेज रेट से कहते फ्लेक्सिबिलिटी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहले देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन एठी से मान कहते नहीं वेज प्राइस इज वेरी रिजिड आमे जदि कहबा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जोटा कहती इनवॉलंटरी लोग माने एठी कोन कहउछन रिजिडिटी से कहले इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नाही जेहेतु फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी किंतु इमाने कहले नहीं रिजिडिटी माने जड़े लोक जड़े लेबर से प्राइस एति वेज प्राइस एति हेले काम करिवो ताठो कम हेले काम करिवो ता कि नहीं सेटा ता पर निर्भर कर रिजिड वेरी रिजिडिटी काइनेटिक मार्केट फोर्स पर निर्भर करू नाही तो अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी हां एटा से कहले देशरा जो अर्थनीति रे सब अनएम्प्लॉयमेंट हेले से माने कहतिले फुल एम्प्लॉयमेंट संपूर्ण एम्प्लॉयमेंट हबो एठी कहले नाही अनएम्प्लॉयमेंट इज ए मेन फीचर ऑफ एन इकोनॉमी सब अनएम्प्लॉयमेंट देखा रे कहिना प्रोडक्टिव रिसोर्सेस जोड़ा अछि सेटा फुल्ली यूटिलाइज हे नाही गवर्नमेंट इंटरवेंशन हम सेठी कहतिले सेठी गवर्नमेंट इंटरवेंशन दरकार नहीं लासेस फेयर कहले हमर दरकार नहीं लासेस फेयर इकोनॉमी सॉरी क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहले हमर गवर्नमेंट इंटरवेंशन दरकार नहीं मार्केट इकोनॉमी अनुसार चलिबो किंतु केन्स कहले नहीं नहीं किछटा एजेंसी दरकार गवर्नमेंट लाइक एजेंसी जे कि इंटरवीन करिवो जेतबेले मार्केट रे किछि परिस्थिति खराब हबो जेमति हमें कहबा रिसेशन हबो तो कोविड समय जो प्रॉब्लम है से समय रे गवर्नमेंट इंटरवेंशन हेले कौन हम ना गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट निजर एक्सपेंडिचर बढ़ाइबो जो आम कहूचे गवर्नमेंट से समय रे ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बा ऑटोनोमस डिमांड तक बढ़ाइबो जोटा कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाइबो तो कहीं ना लोक मान पाखे पैसा नहीं किनिया से समय रे गवर्नमेंट किछि डिमांड बढ़ाइबो थ्रू इंस्टीट्यूशनल परचेस ता द्वारा इकोनॉमी रे पुणी गोटे सुधार आसीबो तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड हमें ठीक कहले तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन एथि दरकार सेकेंड रे हमें गवर्नमेंट तार पॉलिसी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी निये जेमति मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ये सब पॉलिसी नवा द्वारा टाइमली इकोनॉमी रे रिकवरी होय जमते आमर इंडिया रे वर्तमान भारत रे आमर रिकवरी कोविड पर बहुत शीघ्र होइछि बिकॉज आम पाखे गोटे भल मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई नहीं बा फिस्कल पॉलिसी आमर नीतिटा भल अछि फिस्कल नीति भल अछि तो सेति पई शीघ्र आमर सुधार आसुछि नेक्स्ट आमर परवर्ती फीचर हला एग्रीगेट सप्लाई कर्व ताମାନେ ଆମେ ସେଠି କହିଥିଲେ एग्रीगेट सप्लाई कर्व वाला कण तांकर रिलेटिवली इनइलास्टिक माने वर्टिकल एटी से माने कहले एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिक्स एग्रीगेट सप्लाई इज वर्टिकल बट एटी हमर एटा हॉरिजॉन्टल तो लेट अस सम ऑफ कोन करबा ना सम ऑफ करबा ये जो प्रथम पर्याय रे हमें पढ़िले क्लासिकल इकोनॉमिक्स और केन्सियन इकोनॉमिक्स कौन तो ये हमें क्लासिकल इकोनॉमिक्स सजेस्टेड दैट देयर शुड बी नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन प्रथम फॉर डिटरमिनेशन ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट प्राइस एंड वेज एटा आपण मानकर स्टडी मटेरियल भी आपण पाई परिबे सेकंड कहले हम एटा बुझि सारचे गवर्नमेंट रो किछि इंटरवेंशन दरकार नाही माने इकोनॉमी रो कोनोसी चेंजेस पाई गवर्नमेंट रो कोनोसी रोल नाही तो अकॉर्डिंग टू देम क्लासिकलिस्ट द इकोनॉमी एडजस्ट टू एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस थ्रू मूवमेंट ऑफ प्राइस चेंज हेले जहाँ जहाँ डिस्टर्बेंस सप्लाई और डिमांड भीतर हेतो ता पुनी इक्वल हे जो डिटरमिनेशन ऑफ जीडीपी वेज रेट एंड इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड very quickly through movement of price so price is the major factor to maintain equilibrium in the economy अच्छा हमें कहते एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल
सेटा भी पढ़ले केन्सियन सिस्टम रे कोन कहले जे कंट्रास्ट टू क्लासिकल दे बिलीव गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड माने दरकार गवर्नमेंट इंटरवेंशन दरकार टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी then price wage rate and output do not adjust quickly or automatically कहीं ना somehow किछटा इंटरवेंशन हवा द्वारा जाइए माने इक्विलिब्रियम को आसे तापर आम कहले गवर्नमेंट इंटरवेंशन विल न्यूट्रलाइज द एडवर्स इफेक्ट्स सो हाँ बेसिकली क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते इन लॉन्ग रन बेसिकली as it is long they believe in ସେମାନେ long run ରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତ କ୍ଲାସିକାଲ ଇକୋନୋମି କେନ୍ସିଆନ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ମାନେ short run ରେ ବିଲିଭ କରନ୍ତି ତ କେନ୍ସ କହିଥିଲେ long run all of you are dead ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଭାଗ ଯେମିତି କି ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆମର ସରିଲା ଆଜିର ୟୁନିଟ୍ 4 ୟୁନିଟ୍ 5 ର ଅଛି କେନ୍ସିଆଲ ମଡେଲ ଅଫ ଇନକମ୍ ଡିଟରମିନେସନ तो एटा हमें मु कहितली मूलरू जे केन्स जे आसिले एज ए सेवियर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन केमिति ना मु तुम आपण मन को कहितली जे केन्स जो समय रे आसिले सेता बेले बहुत माने अमेरिकन इकोनॉमी और अदर डेवलप्ड इकोनॉमी ने बहुत तांकर इकोनॉमी रे बहुत किछि डिस्टर्बेंस चली थिला माने तांकर इकोनॉमी ठीक ठाक चली नथिला अनएम्प्लॉयमेंट 25% बढ़ी जाइथिला तो एई टाइप रो जीडीपी कमी जाइथिला वे ए जो जिंस देखि पाई केन्स देखिले एठी किछटा करिया खबो ताहले हम स्टेबलाइज इकोनॉमी को स्टेबलाइज करि परिबा से केन्स से समय आसिक क्लासिकल इकोनॉमी सिस्टम कौन प्रोब्लेम से देखे कि नहीं वर्तमान मो अकॉर्डिंग टू केन्स एग्रीगेट डिमांड कैन प्ले वेरी इंपोर्टेंट रोल टू सेव द इकोनॉमी नॉट एग्रीगेट सप्लाई ताले हमें कहबा एग्रीगेट डिमांड गतकाली हमें पढ़िथिले नेशनल इनकम रे एक्सपेंडिचर मेथड रे हमें कहिथिले जीडीपी इज इक्वल टू इन एक्सपेंडिचर मेथड सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट और एनएक्स ता माने हमें टोटल डिमांड हम देशर जदि एटा फोर सेक्टर हेतिबो ओपन इकोनॉमी हेतिबो ताले कंजप्शन एक्सपेंडिचर दैट इज प्राइवेट एंड प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बिजनेसमैन मानकर इन्वेस्टमेंट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक काली हम गतकाली पढ़ी एंड जी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आम जेहेतु केन्स कहले गवर्नमेंट इंटरवेंशन दरकार ताले गवर्नमेंट को से गवर्नमेंट रो निजर एक्सपेंडिचर अछि गतकाली हम पढ़ी तो डिमांड जदि बढ़िया पाई चाहिबो आम जदि आम एग्रीगेट डिमांड तक आम बढ़ाइबा ताले आम कंजप्शन बढ़ाई परिबा इन्वेस्टमेंट बढ़ाई परिबा और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाई परिबा और नेट एक्सपोर्ट बा बाहर देश रो आम अधिका करेंसी आनी परिबा थ्रू एक्सपोर्ट कम करेंसी आम देश रो बाहर को जीव थ्रू इंपोर्ट तो एटा हले एग्रीगेट डिमांड बढ़िबा जतले बाहर एक्सपोर्ट ता बढ़िया हम एक्सपोर्ट बढ़ियो डिमांड आम देश रो देशीय जीडीपी रो डिमांड बढ़ियो तो डिमांड केन्स कहले देखंतो जदियो आम कहूचे सी इज पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड बट सी गोटे पार्ट आई गोटे पार्ट जी गोटे पार्ट आउ इंडेक्स गोटे बट से समय रे लोकों पाखे पैसा नथिला एम्प्लॉयमेंट नथिला तला लोक माने खर्च करि पारु नथिले 1933 कथा कहूची सी केबे हे परिबा नै इट इज समहाउ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू चेंज सी आई आल्सो हम लोक माने कहि चाहू नथिले बिजनेस रे इन्वेस्टमेंट करिया पाई सेटा भी कम तो ओपन इकोनॉमी जदियो सेतबेले बेसी नथिला देखा जाय नथिला फिर भी समस्ते समस्तंकर इकोनॉमी ऊपर चिंता करथिले देयर इज नो सच ट्रेड रिलेशन बेसी देखांतलो ओपन इकोनॉमी बट रहिला कथा जी ता माने से कहले जी इज फ्लेक्सिबल तो गवर्नमेंट कैन इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाय आई जो कोचोटे स्टिमुलस पैकेज बट इट इज लाइक ए स्टिमुलस government can be a savior to the economy by spending किछटा
खर्च बढ़िया द्वारा ताले आम जोटा कहे आम कैपिटल एक्सपेंडिचर पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर यदि बढ़ुची प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ कैपेक्स सो वन ऑफ द मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ एग्रीमेंट जो एग्रीगेट डिमांड इज कंजप्शन तो कंजप्शन बेसिकली आम आज देखा कंजप्शन फंक्शन is the main or consumption is the main part of demand ताले one of the major determinants of agreement demand is consumption expenditure or consumption ताले आमे जानिचे गोटे देशर इनकम हुआ गोटे पर्सनल इनकम इज इक्वल टू तार कंजप्शन प्लस एक्सपेंडिचर तो कंजप्शन प्लेज वेरी वाइटल रोल तो कंजप्शन फंक्शन कौन गोटे C इज इक्वल टू C डैश प्लस CY सी ता माने इटा ला ऑटोनोमस कंजप्शन आ उटाला CY माने चेंज इन इनकम टू चेंज इन कंजप्शन ता माने गोटे देशर कंजप्शन डिपेंड करची लोकी इनकम गोटे इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम ता माने ऑटोनोमस कंजप्शन हला हमर इनकम न बढ़िले भी कंजप्शन बढ़ियो काई नाम जन देखि जे कोविड टाइम रे लोक मानकर इनकम नथिला किंतु से माने तांकर कंजप्शन बढ़ाई परिबे केमिति थ्रू देयर पास्ट सेविंग तो सेटा C डैश प्लस CY माने C is function of Y ता माने when income will increase C will increase then induced it is induced consumption ता माने जतबे इनकम बढ़िबो ऑटोमेटिकली लोक मानकर कंजप्शन बढ़िबो ता माने एठी कोन हला C डैश इज ग्रेटर देन 0 and C that is induced consumption is varies from 0 to 1 ता माने कंजप्शन गोटे लोकर कंजप्शन 0 भी हेई पारे 1 भी हेई पारे 0 1 भितरे सेटा रही पारे तो आमे सेति पई कहूचे C is the C जोटा C आमे जोटा कहूचे C डैश टाला इंटरसेप्ट जोटा की कांस्टेंट आ गोटेला दैट इज व्हाई द लेवल ऑफ कंजप्शन इज देयर इवन इफ इनकम इज 0 ता माने इट इज इंटरसेप्ट आमे नेक्स्ट स्लाइड रे देखिबा ता डायग्राम ता फॉर ईच रुपी इंक्रीज इन इनकम द लेवल ऑफ कंजप्शन इंक्रीजेस बाय C ता माने दिस इज CY ता माने केते प्रतिशत इनकम बढ़िले केते प्रतिशत हमर कंजप्शन बढ़ुची सेटा ला आरो ए जो इक्वेशन रो मुख्य वस्तु मुख्य तो दिस इज द स्लोप ता माने हमें कहबा ए जो CY टाला स्लोप एंड एटाला इंटरसेप्ट ता माने at what rate your consumption is increasing due to change in income माने कंजप्शन केते प्रतिशत बढ़ुची इनकम बढ़िया द्वारा सेटाला स्लोप ह तो इट इज आल्सो नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो CY की हमें कोन कहबा ना केन्स ता बेसिकली एटा पर ध्यान देथिले MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम माने हाउ मच people are consuming due to change in income okay now एठी हमें कह देखिबा से जो डायग्राम काना इकोनॉमिक्स रे आपण माने डायग्राम टाको निहाती गोटे दबा पड़े मार्क पाइबा पय हले ताको बेटर वे एक्सप्लेन करिवे डायग्राम थ्रू तो हमें जहां पढ़िले जो इक्वेशन C C डैश प्लस CY दैट मींस एटाला इंटरसेप्ट OC1 और एटाला स्लोप ता माने ए पर्यंत दिस इज कांस्टेंट इवन दो देयर इज इनकम इज 0 द इनकम लेवल 0 कंजप्शन इज OC1 बट देयर आफ्टर हम ता पर देखण होची ना इनकम बढ़िया जति की परसेंट बढ़ु से अनुसार गोटे स्लोप अनुसार कंजप्शन टाइप बढ़ुची ताने एट सेम रेट एटा देखि परिबे लिनियर ट्रेंड इट्स अ फार्मूला तो इन द above equation the ratio of consumption income is CY and is called average propensity to consume that means we change in consumption change in income that is a ratio it is called average propensity to consume similarly ratio of saving to income is SY that is APS हम कहबा ता माने हम जदी कहबा ए बेले कहि परिबा जे average propensity to consume जुक्त average propensity to save is equal to समान ला 1 ता माने हम जतले कहूचे नरो C is 0 then S is 1 S is 0 C is 1 like this तो सेकंड हमर
ତାଙ୍କର କେନ୍ସଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ जो ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ जो ସେ କନସେପ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଧାରା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଆଜି ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ବା କନଜପସନ୍ ସିମିଲାରଲି ମଲ୍ଟିପ୍ଲ ଏଇ ଯେଉଁ କନଜପସନ୍ଟା କେମିତି ଇନକମ୍ ଡିଟରମିନେସନ୍ କରୁଛି ସେଇଟା मुख्य जिनस कंजप्शन आम जोटा कहले केमिति सेटा इनकम नेशनल इनकम डिटरमिनेशन करने सहयोग करुच्ची दैट इज मोर इम्पोर्टाट तो से कहले मल्टीप्लेयर ता माने आम जदि कहवा मल्टीप्लेयर कौन मल्टीप्लेयर माने आम जदि केन्स कहया कथा ईच इन्वेस्टमेंट आम जदि वी आर चेंजिंग सम इन्वेस्टमेंट आम देशर किसी इन्वेस्टमेंट बढ़ुची ताहले इनकम से देशर से रेट रे बढ़िबो ता माने इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इनकम ऑफ द प्रोडक्ट इन प्रोडक्शन कैपेसिटी ता माने देयरफॉर लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज ता माने से कहवा कथा इन्वेस्टमेंट आम जदि बढ़ौचे ताहले इनकम बढ़िबो ता माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू चेंज इन इनकम तो सेति पई कोन कहले ताने क्यूमुलेटिव चेंज इन एग्रीगेट स्पेंडिंग दैट इज बेसिकली आम जदि कहबा एटा टू सेक्टर जोठी मॉडल रे हो जदले सेठी केवल आम कौन देखुचे ना एग्रीगेट स्पेंडिंग टा जतले बढ़ौचे दैट इज सी प्लस आई thus equal to multiple increase in autonomous spending and the multiple is delta y by delta a that is 1 by 1 minus c ये जोटा कहला delta a माने consumption mpc ता माने 1 by 1 minus c means 1 by mpc marginal propensity to consume ता माने आमर एग्रीगेट जो प्रोडक्शन जोटा बढ़ुची इट इज ड्यू टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड बेसिकली दैट इज चेंज इन कंजप्शन so at what rate consumption is changing so the multiple this multiple is also called multiplier so multiplier ta mane kon na is the amount by which equilibrium output changes when autonomous demand is increasing by 1 unit तो मैंने कैसे बेले कहले ऑटोनोमस मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट टू चेंज इन इनकम हमें इनकम स्वाधीनता इनकम न चेंज करी जो डिमांड टा बढ़ुची दैट इज बेसिकली हमें से कहते there must be autonomous investment must increase or autonomous consumption must increase. If you denote multiplier as alpha, then it is equal to 1 by 1 minus c. Example let us now find out the value of multiplier for various value of marginal propensity to consume. That means how the marginal propensity to consume is related to your change in income. हमें कहले ना अल्फा दैट इज मल्टीप्लायर k इज इक्वल टू 1 by 1 minus c और 1 by 1 minus mpc तो हमें देखिबा जदि एठी c इज इक्वल टू 0.5 देन मल्टीप्लायर केते होबो 2 दैट मींस अल्फा इज इक्वल टू दैट इज मल्टीप्लायर ऑफ k इज इक्वल टू 1 by 1 minus mpc mpc केते 0.5 ता माने इफ यू कैलकुलेटेड हमें कैलकुलेट करने द्वारा हमें पाइबा 2 ता माने हम कहिथिले जदि हमें गोटे इन्वेस्टमेंट बढ़ौचे 2% मल्टी माने गोटे प्रतिशत ताले आउटपुट बढ़िबो 2% तो multiplied by 2% so for in that example in this example it is 2 that means each 1 unit of investment will lead to 2 unit of income okay तो से जो मल्टीप्लायर एक्सटेंशन कला पर से देखले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कौन डेल्टा y 0 is equal to 1 by 1 minus c delta I that is dash then autonomous ये ठीक से कहले c is consumption expenditure और mpc 0.2
तार 20% ऑफ इनकम इज स्पेंड बाय द पीपल. Delta I, that is autonomous, no induce. Autonomous expenditure is कहना हम कहते गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड मनी हियर कहना लोक मान पाखरे सेतिकी वर्तमान इन्वेस्टेबल फंड नाही तो 50 crore तो जदि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 0.2 आउ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है 50 crore then let us find out the change in equilibrium level of income and output. यही केस रे इनकम केते बढ़िबो बा आउटपुट केते बढ़िबो तो डेल्टा वाई 0 इज इक्वल टू हम एठी देखिले फार्मूला अनुसार 1 by 1 minus c और एमपीसी डेल्टा वाई डेल्टा आई तो हियर हम कहले 1 by 1 minus एमपीसी 0.2 तापर हैला इनटू 50 crore माने एटा डेल्टा आई तो एठी हम देखो कैलकुलेशन करिया द्वारा एटा मिलिला 62.5 crore ता माने मु जदि इन्वेस्ट करछि 50 कोटी टंका ताले मते हम देशर केते मु सॉरी हम देश जदि 50 कोटी टंका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करूछि विथ दिस सी 0.2 एमपीसी 0.2 देन हम देशर आय केते बढ़िबो 62.5 crore ता माने this implies आम एटा कौन देखौछि ना जति इन्वेस्टमेंट बढ़िबो से अनुसार इनकम भी बढ़िबो तणो सेही समय रे जेतेबेले क्राइसिस होउछि बा रिसेशन होउछि बा डिप्रेशन होउछि तो हमको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को बढ़िया पड़िबो आमे वर्तमान सेटा को कैपिटल कैपेक्स भी कहि परिबा तो कैपेक्स माने पब्लिक कैपेक्स ता बढ़ुछि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ुछि ऑटोमेटिकली प्राइवेट people or businessmen they will also be affected जोटा कहते हमें तार गोटे इफेक्ट पड़िबो तो multiplier tells us by how much income and output will change if autonomous spending are changing मु मूल कहितले केते हमर इनकम बढ़िबो जेतेबेले हमर ऑटोनोमस स्पेंडिंग बढ़िबो केते परसेंट इनकम बढ़िबो ऑटोनोमस स्पेंडिंग ता बढ़िबो इट मे बी so as a changes or autonomous investment or consumption changes output and income change by manifold it may be 2 it may be 3 it may be 5 हमें जहाँ कही परिया 5 fold रही पारे so the investment multiplier that is alpha is given by 1 by 1 minus c okay तो वर्तमान आमर आमे जहाँ वर्तमान आमे ए पर्यंत पढ़िले जमती कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन कौन पढ़िले ना आमे क्लासिकल इकोनॉमिक्स रे कहले जहाँ आमे आगु परे कथा बा एबे वर्तमान आमे ए पर्यंत केन्सियन इकोनॉमिक डिटरमिनेशन रे कौन पढ़िले ना कंजम्पशन फंक्शन इज द अपवर्ड स्लोपिंग कर्व having a positive relationship with income level ता माने आमे देखिबा भितर को जिबा जदी एठी देखन it is upward sloping curve with change in income means when change in income is increases consumption is also increases the same or a proportionate rate okay and next ला हमें पढ़िले marginal propensity to consume or MPC takes the value between 0 to 1 ता माने हमें कहिथिले marginal propensity to consume 0 भी हे परिबो 1 भी हे परिबो ता माने केतेबेले 0 हो जेतेबेले सेविंग ता 1 थिबो केतेबेले 1 हो जेतेबेले सेविंग 0 थिबो ता माने गोटे इकोनॉमी रे हमें वर्तमान एठी कथा हवा जे marginal propensity to consume ता केतेबेले 1 हो जेतेबेले गोटे देश रे सेविंग बहुत कम थाए जेमति कि हम देश गोटा आर्थिक परिस्थिति लोक मानकर भल नथिला नहीं बा इनकम टा कम अछि तो जेति कि हमर एक्सपेंडिचर हमें जेति रोजगार करछि ता खर्च हो जाउछि खर्च होला पर हमें ताको आ किछि बळुनी सेविंग करे पय ता माने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी 1 व्हेन देयर इज सेविंग इज 0 सिमिलरली गोटे गोटे देश रे रही सेविंग टा अधिक अछि तो सेविंग टा
केतबेले वन वन तो बेसिकली हुए नहीं कहीं ना हमें माने किछटा खर्च करिया पड़िबो तो एनीवे द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किंतु हमें कहि परिबा 0 टू 1 माने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टा आइदर 0 होई पारे बा 0 रु 1 भितरे रही पारे और 1 भी होई पारे तो हमें कहले द रिमेनिंग फ्रैक्शन दैट इज 1 माइनस सी जोटा हमें कहचे 1 माइनस सी सेटा कोन ना 1 is income minus C ता माने what is the रहिला that is propensity to save ता माने MPS is equal to 1 minus MPC ता माने एथरु जाना पड़िला जदी आमे सब्ट्रैक्ट कर दोचे कंजम्पशन फ्रॉम इनकम दैट इज सेविंग तो केन्स कहते जे से कंजम्पशन प्लेज वेरी वाइटल रोल मुझे कही लास्ट क्लास रे पूर्व क्लास रे कही से गोटे आम कहूँ सेविंग इज द वर्च्यू फॉर द पीपल एंड वाइस फॉर द कंट्री और सोसाइटी सो से टाइप माने सेविंग टा आम जदि बढ़ेबा गुड गोटे लोकर इंटरेस्ट से पाइला किंतु अत्यधिक सेविंग हेले कंजम्पशन कमी जाए कंजम्पशन कमिले डिमांड कमिबो डिमांड बा एग्रीगेट डिमांड कमिले तम प्रोडक्शन कमिबो प्रोडक्शन कमिले एम्प्लॉयमेंट कम माने जदि प्रोडक्शन हबनी काई बिजनेस मैन वाला एम्प्लॉयमेंट काई रखिबे तो सेति पई आमे प्रोडक्शन जतले कमुची सेतले एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली कमिबो सेतले एम्प्लॉयमेंट कमिबो ताले इनकम कमी जिवो लोक मानकर तो इनकम कहीं मोर जब रोजगार कमी एम्प्लॉयमेंट कमी इनकम आय ऑटोमेटिकली कमी तो मो आयर जो कमिला मो आय मुझे आय करुच्ची माने दी प्रकार विनियोग करुच्ची केमती ना किछिटा आयर किछिटा पार्ट मुझे कंजम्पशन बा मोर निजर खर्च माने जब माने प्रतिदिन खर्च बा निजर आवश्यकता को पूर्ण करुच्ची कंजम्पशन थ्रू रे आउ गोटे कहूँ जी रहा आम जमी कहूँ आम प्रिकसनारी स्पेकुलेटिव सेविंग रखुचे किछटा सेव रखुचे भविष्य तेणु विथ द हेल्प ऑफ कंजम्पशन वी डिराइव एग्रीगेट डिमांड कर अच्छा आम सेटा जो कहले एग्रीगेट डिमांड रो मेन पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज कंजम्पशन फंक्शन ता माने इट इज इन direct that consumption is related to change in income through multiplier. So assuming government and foreign sector to be absent, the aggregate demand is made up of consumption and autonomous investment. এটা बहुत important আমি যেটা পড়িছিলে কোন পড়িছিলে না গভর্নমেন্ট অফ ফরেন সেক্টর টু বি absent তা মানে कन्स्टाट आम नहीं गले गवर्नमेंट इंटरवेंशन नाई बा फॉरेन सेक्टर ओपन इकोनॉमी है नहीं से क्या बेसी डिमांड टा क्या निर्भर करछे ना एग्रीगेट डिमांड इज मेड अप ऑफ कंजम्पशन एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जोटा कि सी प्लस आई ए दैट इज आई डैश जोटा आम जस्ट देखि दउछि हां दिस इज आई डैश yes this is I dash तो नेक्स्ट टाइम कौन पढ़ले assuming government and consumption and autonomous then hence the slope of AD aggregate demand curve slope टा का निर्भर करछि ना सेम एज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन बहुत इंपोर्टेंट जिनटा ता माने आमे जेतोले ड्रा करछे डायग्राम अपन मान सब ध्यान देबा दरकार जे एग्रीगेट डिमांड कर्व करछे जस्ट मु देखै दउची केमिति होए एटा सपोज एटा गोटे कंजम्पशन कर्व आमे एटा को भी एग्रीगेट डिमांड कर्व कर लिखि पारिबा जति एटा C इज इक्वल टू टोटल डिमांड C इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड जेतोले आमे कहबा एग्रीगेट डिमांड केतोले बढ़िबो ना C प्लस I ता ऊपर आ गोटे आमे ड्रा करि परिबा डायग्राम आम परवर्ती क्लास रे सब देखिबा ड्रा केमते होउची तो एठी त ड्रा करले C प्लस I हे गेला तापर आम चाहूचे किछि इन्वेस्टमेंट काई नाम जी आउ कोन
एक्सटर्नल सेक्टर को कांस्टेंट रखिए ताले सी प्लस आई पर सी प्लस आई डैश तामाने आउ किछि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट चेंज करछे ता द्वारा कोन हबो ना प्रत्येक जितोले आमे बढ़ौचे ए जो एग्रीगेट डिमांड कर तामाने सी प्लस आई प्रथमे सी देन सी प्लस आई देन सी प्लस आई डैश तामाने एवरी चेंज इन दिस कर्व तामाने एग्रीगेट डिमांड हमर बढ़ौ जाय तामाने एग्रीगेट डिमांड बढ़िया द्वारा आमर ऑटोमेटिकली देशर आर्थिक परिस्थिति वृद्धि हेब कहीं मुझे कहली मल्टीप्लायर वे कहीं अल्टीमेटली केन्स कहले कंजम्पशन इज मोर और लेस रिलेटेड टू इनकम दिस इज द रेशियो हाँ नेक्स्ट आम जो कहचे हेन्स आम यदि कहवा and the slope of aggregate demand is same as the slope of consumption function तामाने जेमिति consumption curve जेमितिया से बेले aggregate demand curve तारी ऊपर ऊपर आपण मन ड्रा करी कि जोटी इंटरसेक्ट होला सप्लाई और डिमांड ताले एठी इक्विलिब्रियम पॉइंट हबो आमे आगुर देखिबा इंटरसेक्शन आमे जदि मो एठी हमरो डायग्राम टा देखैली आपण माने आपनकर बही रे जो मटेरियल रे अछि देखिबे intersection of aggregate demand curve with aggregate supply curve is known as Keynesian cross or given the equilibrium level of income or output ता माने ए जो आमे कहले Keynesian economic determination income determination केते बेले हबो जेते बेले aggregate demand curve टा aggregate supply curve को आमे कट करिवो तो aggregate supply curve in basically if it is independent of income and all then it is horizontal horizontal आमे आगु को देखिबा horizontal to x axis तो सेतबेले जेतबेले आमे प्रत्येक aggregate demand curve ताको क्रॉस करूचे देन एवरी पॉइंट रे आमे इक्विलिब्रियम पॉइंट होते पाइबा तो intersection of AD curve is known as Keynesian cross are giving the equilibrium level of income and output. This level of income and output are dependent upon autonomous investment and slope of AD curve. It is बहुत important. आपण माने ध्यान दियंतो जे केन्स कहले जति आम देशर अर्थनीतिर इनकम और आउटपुट बढ़ाइबा पे हम चाहिबा ताहले according to our Keynes कहउछंती autonomous investment or consumption तक बढ़ाइ परिबा that means autonomous investment or that is slope of AD curve that is ता माने आमे कहले slope of AD curve टाको यदि हम बढ़ाउछे ताले ऑटोमेटिकली इनकम और आउटपुट बढ़िबो तो एटा हला नेक्स्ट आमे पढिथिले मल्टीप्लायर तो व्हाट इज मल्टीप्लायर आमे multiplier tells us by how much income and output will change if autonomous spending changes and at what rate your income or output of your country is changing kette प्रतिशत बा केते हार रे तमर इनकम और आउटपुट बा तमर व्हाट देशर इनकम और देशर आउटपुट बढ़ुची विथ चेंज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग तामाने एठी से कहउछिन जे गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड ऑटोनोमस स्पेंडिंग केतेबेला हो जेतेबेला गवर्नमेंट इंटरवेन करिवो गवर्नमेंट ताथरे खर्च करिवो तो आज ए चेंजेस द आउटपुट एंड इनकम चेंजेस मैनीफोल्ड तामाने जेतेबेला हमर ऑटोनोमस स्पेंडिंग बढ़ुची देन आउटपुट और इनकम मैनीफोल्ड माने द्रुत विभिन्न द्रुत गति रे एटा बढ़ी चलिबो सेटा कहउछिन मल्टीप्लायर तने सेही समय केन जेतला आसिथिले से मल्टीप्लायर थ्योरीटा बा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर थ्योरीटा बहुत अफेक्ट करथिला बहुत प्रभावित करथिला अर्थनीति को ता परे से देश माने से क्राइसिस रो इकोनॉमी संकट आर्थिक संकट रो मुक्त पाइथिले बा फ्री हेथिले तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिनोटेड बाय
1/1 माइनस एमपीसी। तो आपण माने कौन करेंगे जिते जमी मुझे देखली आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जमी गोटे क्वेश्चन देथिबो सी देथिबो डेल्टा आई देथिबो बा जहाँ तुमको गिवन देथिबो तमे ये फॉर्मूला पकई ताको कैलकुलेट करिया पड़िबो। बेले बेले क्वेश्चन खाली भी आसेनी खाली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर खाली एग्जाम खाली न्यूमेरिकल आसेनी व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड हाउ द within the given condition how the what is the multiplier of a particular economy एम जदि आसीबो तो मल्टीप्लायर कोन केमिति मल्टीप्लायर डेरिवेशन होउची ये तमे हे मटेरियल रो हमें रेफर करी हमें से आंसर टा लिखि परिबा। तो तो वर्तमान हमें पुणी आज दिन टू सम अप आम यदि कहवा व्हाट इज द मेजर टेक अवे फ्रॉम दिस डिस्कस आज डिस्कशन रू आलोचना रू आम कौन पाइले अगेन आउ थे 2 मिनिट मु आपण मानको पुणी समराइज करूची सम अप करूची। आज अध्याय थिला यूनिट 3 4 एंड 5 जोटा कि आपण माने ब्लॉक 2 रे पाई परिबे। आउ सेतरे थिला क्लासिकल ऑफ केन्सियन सिस्टम प्रथम यूनिट 4 आउटला केन्सियन मॉडल ऑफ इनकम डिटरमिनेशन। तो क्लासिकल इकोनॉमी सिस्टम आम पढ़ी थिले कौन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट किए से माने तांकर फीचर्स कौन थिला इंपोर्टेंट फीचर्स कौन थिला माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज से माने मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज नथिले लासेस फेयर इकोनॉमी ऊपर विश्वास करथिले कंटीन्यूअस मार्केट क्लियरिंग मींस देयर इज ऑटो क्लियरिंग ऑटो जनरेटिंग जोटा कहती मार्केट इज क्लियर्ड ऑटोमेटिकली नो गवर्नमेंट रिटर्न ना प्राइस प्लेज वेरी वाइटल रोल डिमांड एंड सप्लाई अनुसार मार्केट क्लियरिंग हुए आ भीतर मन पकई दोची। तापर आम कहले परफेक्ट कंपटीशन से बिलीव करती ना मार्केट प्लेयर्स बहुत थांती तेणु प्राइस टा डिसाइड कई जड़े करें तेणु डिसाइड कर इंडस्ट्री समस्ते प्राइस जहाँ डिसाइड है इंडिविजुअल बिजनेसमैन से प्राइस टाक से एक्सेप्ट करेंगे जमती वेज प्राइस हो जो प्रोडक्ट प्राइस हो। तापर आम पढ़ी जोटा कि मॉडल ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो मॉडल थिला मेन मॉडल थिला सेज लॉ ऑफ मार्केट और जे भी से कौन कहते मु जो कहली क्लासिकल इकोनॉमिक्स दे बिलीव इन सप्लाई साइड और केन्सियन इकोनॉमी बहुत इंपोर्टेंट आपण माने मन रखिए क्लासिकल इकोनॉमिक्स सप्लाई साइड ऊपर बेसिकली गुरुत्व दउथिले आउ केन्सियन इकोनॉमिक्स डिमांड जोटा हम एग्रीगेट डिमांड बा इफेक्टिव डिमांड ऊपर हम आलोचना करूथिले। तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड नो देयर इज नो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड नॉट सरप्लस ऑफ डिमांड काहे कि ना ऑटोमेटिकली मार्केट एटा ऑटोमेटिकली मार्केट अनुसार डिमांड और सप्लाई अनुसार तमरो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम को आसीबो समानता को आसीबो। हमें पढ़िले आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इन द क्लासिकल सिस्टम केमिति हमें सेटा को हमें देखिले ए जो डायग्राम सहित हमें देखिले यस हमें ये देखिले इक्विलिब्रियम कंडीशन इन द लेबर मार्केट is determines that means through that means हमने कहबा दी equilibrium condition in the labor market that is aggregate demand labor labor supply along with production function determines output employment and real wage in a classical system it है classical system रो employment and output determination जोटा कि एटा हमने तार डायग्राम देखिले। Similarly, aggregate supply function देखिथिले supply केमिति ना vertical to the x-axis तापर केन्सियन सिस्टम हमें देखिले केन्सियन सिस्टम में देखिले तांकर फीचर कौन केन्स कहले नहीं जहाँ जहाँ क्लासिकल कहते से बड़ा भूल प्रमाणित हला काहे कि ना जदि ऑटो जनरेटेड ऑटो क्लियरेंस होता मार्केट रहता हले 1933 रे जो प्रॉब्लम हला काहे केला तो सेति पई से पहले डिमांड plays very vital supply is not creating its own demand rather demand तो rigidity price rigidity wage rate एगुला सब हमें देखिले अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो हमें शेषरे पढ़िले एग्रीगेट डिमांड रो मुख्य कंपोनेंट जोटा किए कि कंजप्शन तापरे मल्टीप्लायर लास्ट रे हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर थ्रू रे गोटे कैलकुलेशन करले। तो
आजिर अध्याय ये आजिर अध्याय ये परिसमाप्ति होची आपण माने नेक्स्ट आम परवर्ती अध्याय आसंता काली तार गोटे नुआ यूनिट को नहीं आम आरंभ करवा यूनिट नंबर 6 और 7 ब्लॉक 3 तो आज पे ये नमस्कार।